किए जाते हैं। यह है हमारा PSLV-C58 का उपग्रह एक्सपोसैट। इसमें दो मुख्य भाग हैं जिसका नाम है एक्सस्पेक्ट और पोलिक्स। पूर्ण परीक्षित कर एक्सपोसैट को दे पेलोड रिएक्टर के साथ चतुर्थ चरण के ऊपर में समायोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही पोएम के लिए 10 मितभारों को चतुर्थ चरण के साथ समायोजित कर दिया गया। इस समायोजन को मोबाइल सर्विस टावर पर लाकर PSLV रॉकेट के साथ समायोजित किया जा रहा है। यह ऊष्मा कवच हीट शील्ड और इस तरह तैयार है PSLV-C58 रॉकेट। यहां से परीक्षण शुरू होते हैं और परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात प्रमोचन की स्थितियां प्राप्त की जाती है और प्रमोचन किया जाता है। वर्तमान में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है और अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर। Studying of celestial objects unveils several mysteries. In September 2015, ISRO had launched first dedicated Indian astronomy mission called AstroSat, aimed at studying celestial sources in X-ray, optical and ultraviolet spectral bands simultaneously. One of its objectives was to detect new briefly bright X-ray sources in the sky. While the AstroSat is still healthy and its payloads are continuing to provide valuable scientific data, XPOSat is a step ahead in the study. It is expected to unravel some extreme phenomena. The astronomy community is particularly enthused about the prospect of systematic exploration into the polarization of X-rays emitted from astronomical sources. This aspect of study is the latest emergence in observational astronomy. Earlier tools included imaging, studying the fluctuations of light from source, and spectroscopy, which is basically a study of spectrum of electromagnetic radiation emanating from celestial bodies. Earlier observations could reveal chemical composition, temperature, distance, velocity, and luminosity. Analyzing X-ray polarization signature enables measurement of deeper insights through manifestation of processes generating these X-rays having distinct signatures within appropriate energy bands, depending on the involved energetics. The XPOSat mission by ISRO is specifically designed to investigate such X-ray polarization signatures emanating from bright X-ray sources. The primary payload, polarimeter instrument in the X-rays or POLIX, operates to measure polarimetry parameters in the medium X-ray energy range of 8 to 30 kiloelectron volts photon. The first payload for this energy band. Its collimator plays a crucial role to ensure that only one bright source is within the field of view for most observations. The second payload, XPECT, X-ray spectroscopy and timing instrument, is designed to offer fast timing and excellent spectrometric resolution in soft X-rays, that is 0.8 to 15 kiloelectron volts energy band. उड़ान से 4 मिनट 22 सेकंड की दूरी पर। आइए अब आपको इस उड़ान के घटनाक्रम से संक्षिप्त परिचय देते हैं। सर्वप्रथम रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स T-3 सेकंड्स पर प्रज्वलित किए जाएंगे। उसके बाद T0 पर कोर बूस्टर प्रज्वलित होगा और इसके 400 मिलीसेकंड के पश्चात और स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को प्रज्वलित किए जाएंगे। इस समय यान का उत्प्रोपन होगा। लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर स्ट्रैप-ऑन के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे और इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। कोर बूस्टर S139 बूस्टर प्रज्वलित रहकर कुछ 110 सेकंड तक
प्रज्वलित रहकर यान को 57 किलोमीटर प्रदान करेगा तथा 1.62 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात द्वितीय चरण को प्रज्वलित किया जाएगा और प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण 152 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा और इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा और इसी दौरान ऊष्मा कवच को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। PS2 द्वितीय चरण के कार्यकाल के पश्चात इसे पृथक कर दिया जाएगा और इसके पृथकन के 1 सेकंड के पश्चात ही तृतीय चरण जो कि उच्च निष्पादन वाला HPS3 चरण है, ठोस रोधक पर आधारित चरण, इसका प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। तृतीय चरण का प्रज्वलन काल 123 सेकंड का होगा और इस समय यान 206.8 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.23 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा। तृतीय चरण के कार्यकाल के पश्चात द्वितीय चरण तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्ट फेज की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा होगा और यह कोस्ट फेज करीब 200 सेकंड तक जारी रहेगा। इसके पश्चात तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा, लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन से 425 सेकंड तक यह कोस्टिंग फेज जारी रहेगा। कोस्टिंग फेज समाप्त होते ही चतुर्थ चरण का प्रज्वलन होगा और यह वह अंतिम चरण है जो एक्सपोसेट उपग्रह को निर्धारित कक्षा पर लेकर जाएगा और उद्देश्य कक्षा में प्रक्षेपित करेगा। We are very close to the launch and let me quickly run you through the flight events. About the nominal flight timelines for the PSLV-C58 XPOSAT mission. At T0, which is scheduled at 9 hours 10 minutes, the first stage PS1 ignites and followed by the ignition of the two strap-on motors 400 milliseconds later. The strap-ons continue to burn for 70 seconds, after which they are separated from the ongoing launch vehicle. The PS1 stage, that is the core S139, separates 109 seconds into the flight. By this time, the launch vehicle would have gained an altitude of 57 kilometers and acquired a relative velocity of 1.6 kilometers per second. The stage 2 ignites after PS1, continues to burn for 152 seconds. Operational time for PS3 is 124 seconds. PS4 will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be achieved. Real-time programs activated. PSPP open. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV-C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV-C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp tracking station currently tracking the flight. Ground lid strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude
and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथक्करण तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन. First stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है. प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है. इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है. इसकी पुष्टि हो चुकी है. ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है. Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है. इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है. वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है. By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Shah tracking station continues to track. Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई वर्तमान में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड. तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है. Shah and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा. इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा. सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण. Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है.
और इसके Vehicle पश्चात in ही combined hosting for approximately 200 seconds. इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है. There is a confirmation of expected performance by the PS3 stage, and currently the thrust has been cut off, but the vehicle is coasting with the PS3 still intact. The separation of PS3 has not yet taken place. Vehicle performance normal. यह कोस्टिंग फेज 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा. उसके पश्चात तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा. The combined coasting continues for 200 seconds. Thereafter, the separation of PS3 takes place, but PS4 continues to coast for another 400 seconds. During the coasting phase of flight, the relative velocity reduces from 7.2 kilometers per second to 6.7 kilometers per second, and as a result, close to 400 kilometers increase will be observed in the altitude. एक्सपोसेट विभिन्न खगोलीय विकिरण उत्सर्जन स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाशगंगा, नाभिक, पल्सर पवन, निहारिका आदि से उत्सर्जित उत्पन्न जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है, और इसे समझना खगोलविदों के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है. एक्सरे पोलैरिमीटर हमारी समझ में दो और आयाम जोड़ेंगे. यह है ध्रुवीकरण की मात्रा तथा ध्रुवीकरण का कोण, और इस तरह यह खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने में उत्कृष्ट निदान उपकरण साबित होंगे. एक्सपोसेट द्वारा भारतीय विज्ञान समुदाय की राह पर यह एक प्रमुख अनुसंधान की दिशा है. एक्सपोसेट में दो मुख्य वैज्ञानिक निदभार हैं जिनका नाम है पॉलेक्स और एक्सस्पेक्ट. इस उपग्रह का कुल भार 469 केजी है. इस मिशन में लगभग 145 केजी के वैज्ञानिक निदभार अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए सफर कर रहे हैं. इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोयम 3 का नाम दिया गया है. सर्वप्रथम पोयम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV-C58 द्वारा देखा गया था. फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV-C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा. आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है. तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है. Vehicle in separated hosting for approximately 425 seconds plus 10 minutes. तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है, और इस दौरान PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है. यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा. The PS4 is currently not operational, though it is in the coasting phase, which will continue for 425 seconds in all. Vehicle performance normal. The PS4 stage, when it ignites, will continue to burn for 247.5 seconds. Thereafter, the injection parameters of the spacecraft Exposat will be achieved. After injection of the primary satellite, PS4 has yet another milestone to accomplish. It lowers to an orbit of 350 kilometers. After Exposat injection, this orbit will be at 9.6 degrees inclination, which is achieved through 2 restarts. These maneuvers are expected to take 83 minutes from the Exposat injection. Once the new orbit
Once in the new orbit, PS4 will be subjected to passivation by venting remnant propellants and depressurizing the stage tanks. Thereafter, the control of stage is transferred to POEM avionics. Vehicle performance normal. There are 10 payloads in POEM, 7 of which are finalized through in space. Speaking about the payloads that Plus 12 minutes. POEM carries, Radiation Shielding Experiments Module RSEM is designed by a firm called Take Me to Space for evaluation of effectiveness of tantalum coating. The second payload, Women Engineered Satellite or VSAT for solar irradiance and UV index from LBS Institute of Technology for Women. Third payload is an amateur radio satellite, Belief Sat-O from KJ Somaya Institute of Technology. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து PSLV-C58 ராக்கெட்டானது ஏவப்பட்டிருக்கிறது. விவரங்களோடு இணைகிறார் எமது செய்தியாளர் ராஜகுமாரன். அவரிடம் பேசலாம். வணக்கம் ராஜகுமாரன், விவரங்கள். இந்த ராக்கெட்டை பொறுத்தவரை மொத்தம் 5 ஆண்டுகள் ஆயுள் காலம் கொண்டது. கிட்டத்தட்ட பூமியிலிருந்து 650 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது. இதற்கென 20 நிமிடத்திற்கு மேலான தன்னுடைய வெற்றிகரமான பயணத்தை தொடங்கி தற்பொழுது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து கிழக்கு நோக்கிய திசையில் ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்ட பாதையிலிருந்து சற்றும் மாறாமல் தொடர்ந்து தற்பொழுது இந்த ராக்கெட் பயணம் செய்து வருகின்றது. 2023ஆம் ஆண்டில் பல்வேறு சாதனைகளை செய்திருந்த இஸ்ரோ தற்பொழுது 2024ஆம் ஆண்டின் முதல் நாளிலேயே ஒரு வெற்றிகரமான பயணத்துடன் பல்வேறு ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்ள இருக்கின்றது. பூமியிலிருந்து பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திர சூரியன்களை எல்லாம் ஆய்வு செய்திருக்கக்கூடிய இஸ்ரோ முதன்முறையாக தன்னுடைய ஆய்வு பயணத்தில் கருந்துளை என்று சொல்லப்படக்கூடிய எந்த ஒரு நாடும் பெரிய அளவில் ஆராய்ச்சி செய்யாத ஒரு வானியல் நிகழ்வுகளை ஆய்வு செய்வதற்காக இந்த செயற்கைக்கோளை வடிவமைத்திருக்கிறார்கள். அதன்படி PSLV-C58 ராக்கெட் மூலமாக செலுத்தப்படக்கூடிய இந்த செயற்கைக்கோளில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்போசாட் எனப்படக்கூடிய அதிநவீன செயற்கைக்கோளினுடைய பங்களிப்பு மிக அதிகமாக இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. தொடர்ச்சியாக அங்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்ரோவின் தலைவர் உள்ளிட்ட அந்த திட்ட இயக்குனர், விண்வெளி சார்ந்த ஆய்வு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் ஸ்ரீஹரிகோட்டா மையத்தில் இருந்தவாறு அந்த ராக்கெட்டினுடைய செயல்பாடுகளை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். திட்டமிடப்பட்ட பாதையிலிருந்து சற்று மாறாமல் தொடர்ந்து அந்த ராக்கெட் பயணம் செய்து வருகின்றது. இதில் மிக முக்கியமாக நாம் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்போசாட் மட்டும் இல்லாமல் கேரள மாநிலத்தை சார்ந்த மாணவிகள் வடிவமைத்த ஒரு சிறிய செயற்கைக்கோள் உட்பட 10 செயற்கைக்கோள்களும் இருக்கின்றன. அதன்படி திருவனந்தபுரம் லால் பகதூர் சாஸ்திரி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவிகள் பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய புற ஊதா கதிர்கள் மற்றும் கேரள மாநிலத்தினுடைய தட்ப வெப்பநிலையை அறிந்து கொள்வதற்காக வெசாட் என்கின்ற பெயரில் ஒரு சிறிய செயற்கைக்கோளை வடிவமைத்திருந்தார்கள். அந்த செயற்கைக்கோளும் சிறிய அளவிலான அந்த 10 செயற்கைக்கோள்களில் ஒன்றாக இடம்பெற்றிருக்கின்றது. மொத்தமாக 11 செயற்கைக்கோள்களுடன் தற்பொழுது இந்த PSLV-C58 ராக்கெட் தன்னுடைய 60வது பயணத்தை தொடங்கி இருக்கின்றது. அந்த கேரள மாணவிகள் வடிவமைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சேட்டலைட்டை பொறுத்தவரை அந்த பெண்களினுடைய மேற்பார்வையில் முழுமையாக வடிவமைக்கப்பட்ட நாட்டின் முதல் செயற்கைக்கோள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் கேரள மாநிலத்தினுடைய பல்கலைக்கழக மாணவிகள் மட்டுமல்லாமல் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பல்வேறு சிறிய நிறுவனங்கள், இந்தியாவில் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவதற்கு ஆர்வமுள்ள பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்களுடைய செயற்கைக்கோள்களும் இதில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. என்றாலும் இந்த பயணத்தினுடைய மிக முக்கிய நோக்கமாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போசாட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கருவிதான் மிக முக்கிய ஆய்வு கருவியாக விஞ்ஞானிகளால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. கருந்துளை என்று சொல்லப்படக்கூடிய விண்மீன்களில் இருந்து அந்த நிலையை அடைந்திருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட அந்த பரப்பளவை ஆய்வு செய்வது மிக முக்கியமான ஒரு ஆய்வு பணியாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பிரபஞ்சம் எப்போது உருவானது என்பதற்கான ஆய்வு தற்பொழுது உலகின் அனைத்து நாடுகளாலும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. ஏனென்றால் பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒவ்வொரு நகர்வுகளையும் கண்காணித்தால் மட்டும்தான், அது குறித்து அறிந்து கொண்டால் மட்டும்தான் பூமியில் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு காலநிலை மாற்றம் போன்ற சவால்களை சமாளிக்க முடியும் என்ற அடிப்படையில் பல நாசா உள்ளிட்ட விஞ்ஞான அமைப்புகள் எல்லாம் 2021 முதலே கருந்துளை பற்றி ஆய்வை மேற்கொள்வதற்காக செயற்கைக்கோள்களை செலுத்தி இருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்படையில் தான் சந்திரன், சூரியன், செவ்வாய் என்று பல்வேறு கோள்களை ஆராய்வு செய்திருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள், சூரியன் போன்ற மிகப்பெரிய நட்சத்திரத்தையும் ஆய்வு செய்வதற்காக ஆதித்யா L1 போன்ற விண்கலனை எல்லாம் அனுப்பி இருக்கக்கூடிய இஸ்ரோ 2024 ஒரு முற்றிலும் புதுமையான ஆய்வு